Hello students, today chapter 5 coordinate geometry will start studying section formula, and in section formula we will study division of line segment. This is the first part of practice set 5.2. There will be 3 more parts which will come from the same practice set 5.2. Section formula. Section formula. To understand section formula, we should understand what does it mean. Section means a part. Now suppose you have a line segment AB and there is a point P which divides this line segment AB in some part. So this will be called as first section and this will be called as second section. This formula helps us to find how this point P comes when the ratio is given. Or if the point P is given, then you can find the ratios of it also. Now let us see in detail. In the figure, point P is on segment AB in XY plane and it divides segment AB in the ratio m:(n). So AP और PB का रेशो है m:(n). पॉइंट P वो पॉइंट है जो AB सेगमेंट को m:(n) रेशो में डिवाइड करता है। अब हम देखेंगे क्या XY प्लेन में अगर इस तरह से ये लाइन सेगमेंट डाली जाए, सो दिस इज XY प्लेन। अब हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। A इज x1 y1, वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे डालेंगे तो इट विल बी x1 0। यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे डालेंगे तो हमको PQ मिलेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ Q विल बी x0। B से एक परपेंडिकुलर नीचे डालेंगे, B मिलेगा, कोऑर्डिनेट इज x2 0। This is what it is written. Draw segment AC, PQ and BD perpendicular to x-axis. So when you drop the perpendicular, you get the coordinates. From this, we get the coordinate of point P. Right? The coordinate of point which divides the line segment joining point A, which is x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m:(n) are given by mx2 plus nx1 upon n plus n, my2 plus ny1 upon n plus n. Each formula can be derived. So let us see how we get this. This is the diagram. You have plotted the perpendiculars on x-axis. You got this coordinate. Now just see. AC is parallel to PQ is parallel to PD. AC is parallel to PQ is parallel to PD. We have studied this in parallel lines. When you have three lines which are parallel to each other, then the ratio of this is equal to ratio of these two sides. This you have studied in your similarity also, the first chapter. Now, distance CQ will be x minus x1. Similarly, distance QD will be x2 minus x. This is going to help us. Now the property of intercept of three parallel lines AP, this we have studied, AP upon PB is equal to CQ upon QD. AP upon PB is equal to CQ upon QD, which is given equal to m upon n. This is given to us. The ratio is given to us. Then in place of CQ and QD, we are writing x minus x1 from here and QD is x2 minus x. This will be equal to m upon n. Let us solve this. Once we solve this, this goes cross multiplication, n into x minus x1, which is equal to m into x2 minus x. Open the brackets. Taking x to one side and taking it common, you get x in bracket m plus n is equal to mx2 plus nx1. On further simplification, we get x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly, we get y is equal to my2 plus ny1 upon n plus n. Thus, we get the coordinate of point P in this form. Now, let us see this. Again,
in different manner. A is x1, y1. P is the point xy. This is x2, y2. This ratio is m:n. अब हम देखेंगे कि भाई A है हमारे पास, A है x1, y1, B है x2, y2, P पॉइंट है जो AB सेगमेंट को m:n रेशियो में डिवाइड कर, राइट? इसको हमने लिखा। अब हमको मिलता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरह से हमको y मिलेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दो फॉर्मूलेस हमें याद रखने हैं। अब दिस टू फॉर्मूलाज टुगेदर आर कॉल्ड एज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखेंगे याद कैसे रखना है ना। मैथ्स बहुत सुंदर है, बहुत लॉजिकल है। हमेशा छोटे छोटे तरीके अपने तरीके से ढूंढ के निकालेंगे और जिससे हम याद करेंगे। The coordinate of P are mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। इसको याद करने का एक तरीका। This figure will help you to remember the section formula। ये m एक लाइन बनाइएगा, कभी भी क्वेश्चन आए एक लाइन बनाइएगा, पॉइंट लिख दीजिएगा, m और n को भी डायग्राम पे लिख दीजिएगा। अब बहुत आसान हो जाएगा। m x2 plus n x1, m x2 plus n x1 upon m plus n। Similarly, m y2 plus n y1 upon m plus n. Easy. Now, let us see the first numerical from the exercise. Find the coordinate of point P, which divides the line segment joining point A, which is -1 and 7. The coordinate of point A is -1 and 7, and coordinate of point B is 4, 3, 4 minus 3 in the ratio 2:3. Now, first thing first, let the coordinate of P be xy and A is x1, y1 and B is x2, y2 be the given points. Here x1 is equal to -1, x2 is equal to 4, y1 is equal to 7, y2 is equal to -3, m is equal to 2, n is equal to 3। पहले सब के सब लिख के रख लेने, हमारा डाउट क्लियर हो जाता है, चीजें आसानी से समझते हैं। शुरुआत में डायग्राम्स ड्रॉ कीजिएगा, बाद में एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब क्या बताएं, m x2 n x1, आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। आपने शुरू किया 2 into 4 प्लस 3 into -7, 3 into -1 divided by 2 plus 3, 4 2s are 8, 3 into -1 becomes -3 upon 5, which is 5 upon 5, which is equal to 1. Next, y. Same way, m. Y is what? -3. So m y2 plus n. आपका n आया, y1 7, आपने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, सॉल्यूशन निकाला, आपका आंसर आया 3। So यहाँ आपको लिखना जरूरी है, the coordinate of point P are 1, 3. Next question. In each of the following example, find the coordinates of the point. ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम फर्स्ट वाला देखते हैं। P दिया है -3, 7, Q दिया है 1, -4, A is to B is given 2:1। स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया, आपको लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। The coordinate of point A are x, y और x, y आपको लिखना ही पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ कीजिए, m लिखिए, n लिखिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, फॉर्मूला लिखा। उससे पहले आपने ये सारे पॉइंट्स लिख के रखे।
क्यों लिख के रखे ये सारे पॉइंट्स? जैसे ही हम यहाँ पहुंचे हैं, इमीडिएटली हमको ध्यान में आ जाता है कि हमारे फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। वो लिखने से पहले आपको उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा। लेट p x1 y1 and q b x2 y2 be the given points. Here x1 is this, y1 is this, x2 y2 इसका डिटेल लिखिएगा। बाद में सेक्शन फॉर्मूला लिखिएगा। जैसे ही आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे करेंगे। m 2, यहाँ से जाएंगे इधर 1 प्लस n 1 माइनस 3, यहाँ से माइनस 3, वो डायग्राम याद कीजिए। अब 2 + 1 = 3, एक बार सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया, x का वैल्यू आया। उसी तरह से आप y का वैल्यू निकालेंगे। लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A are -1/3, 1/-1/3. Then next, second question. P क्यों दिया है? A/B is given 3:4. आपको A भी दिया है तो आप A भी लिखिए। MN में कंफर्टेबल है, आप MN में लिखिए। लेट आपने वैल्यूज डाला, सेक्शन फॉर्मूला लिया, उससे पहले डायग्राम बनाया। फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला 3 × 4, 3 × 4, 4 × -2 upon 3 + 4, which is nothing but 4/7. Next, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 3 × 3 plus 4 into -5, 3 plus 4, you got the values. Last answer लिखना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने हाथ से सॉल्व कीजिए एंड आई विल गिव यू द आंसर। डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, फॉर्मूला लिखिए सेक्शन फॉर्मूला का। पहला आंसर 1 - 4, 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 3, आपको आंसर आएगा। उसी तरह से आप y सॉल्व कीजिएगा। लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सपोज यू हैव पॉइंट A, B such that A dash P dash B. Then find the ratio in which point P, which is given by 11, 15, divide segment AB. Find the ratio using x and y coordinate. Write the conclusion. Textbook page number 113. This question is given to you. आपने सपोज किया पॉइंट P दिया है 11 and 15। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद आपने सेक्शन फॉर्मूला लिखा। अब हमें m/n मालूम नहीं है, इसलिए हम m और n को एज इट इज रखेंगे। 9m + 15n upon m + n, दिस इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11m + 11n इज इक्वल टू 9m + 15n। m एक साथ लीजिए, n एक साथ लीजिए, आप सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू आएगा 2:1। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, टीचर आपने तो ये ले लिया, हमें कैसे मालूम चलेगा? हमने अगर y लेके सॉल्व किया तो या यू कैन सॉल्व बाय y also. If you solve by y, again you will get the similar answer. And the best part is you solve by x or you solve by y. Every time the answer which you get is same. We see the next question. Question number 3. Find the ratio in which P divides the line segment joining P and Q. अब शुरुआत के इसमें क्या था? M और N दिया हुआ था और हमको पॉइंट P या T निकालना था। यहाँ क्या है? पॉइंट इज गिवन एंड यू आर सपोज टू फाइंड द रेशियो। यू हैव बोथ द फॉर्मूलास। आप सबसे पहले लिखेंगे लेट P is x1 y1, Q is x2 y2 and T is x, y with the given point. Here x1 is -3, y1 is 10, values डाला।
After substituting the values, you write the section formula. After writing the section formula, substitute the values. Once you substitute the value, you can write for x or you can write for y. Cross multiply, m plus n into minus 1 becomes minus m into minus n. You get this. When you try to solve, get the value m upon n is 2 upon 7. Again, if I solve by y, I will get the similar answer. In order to save time, I am not doing it. Point T divides segment PQ in the ratio 2:7. Last answer, very important. Thank you. Hope you like this. Please like, share and subscribe.